the foundation on the pillars of knowledge, wisdom, perseverance, and dedication that provided a living and a learning environment where students and faculty members can all pursue their dreams. On behalf of the entire institute, we wish to express our deepest gratitude for his exemplary leadership and vision. Sir's dedication to the betterment of the institute and society at large serves as an inspiration for all. And I'm sure Sir will be witnessing this event from above, and his blessings will always be a guiding light for us. Let's have a round of applause for such a visionary soul. Today, it is our utmost honor to welcome and introduce our management members who are indeed a backbone of this institution. Mr. Anupam Goyal, Secretary, IPM Group of Institution, Professor Dr. Subhendra Goyal, Executive Director, IPM Group of Institution, Colonel A.S. Malhotra, General Director, IPM Group of Institution, Dr. E.P. Sharma, Director, IPM Group of Institution, and Dr. Shashank Chaudhary, Dean Academies, IPM Group of Institution. Their unwavering commitment to academic excellence and institutional progress has been a driving force behind IPM's consistent achievements. With their sharp insights and leadership, they have ensured that IPM remains a hub of innovation, learning, and inspiration. Their unconditional support and guidance has fostered an environment that encourages creativity, collaboration, and excellence. Thank you all for gracing this occasion with your valuable presence and for guiding us throughout. As we commence this prestigious seminar, we uphold the tradition that symbolizes knowledge, wisdom, and the pursuit of enlightenment, the ceremonial lighting of the lamp. The lamp is not merely an object of illumination, it signifies the eradication of darkness, the triumph of knowledge over ignorance, and the light of collective wisdom that guides us towards a prosperous future. To mark this auspicious beginning of the event, we now invite all our esteemed dignitaries to please step forward and grace the occasion by lighting the ceremonial. So, ma'am, please.
guest of honor, whose invaluable contribution to the legal domain deserves an appreciation. Her vision, leadership, and relentless pursuit of excellence have not only inspired many, but have played a crucial role in advancing the realm of law. To express our heartfelt appreciation, I now request Professor Dr. Sugandha Goel, Executive Director, ma'am, and Dr. D.P. Sharma, Director, IPEM Law Institution, to felicitate Professor Dr. Kiran Gupta, Professor, now sent to Delhi University with a memento and pastoral sapling as a token of our respect and gratitude. Hyper-connected world. Cybercrime is not just a technological threat. It is a social, legal, and a national concern that affects individual institutions and the entire nation alike. From data breaches to financial frauds to identity threats and cyber terrorism, the digital landscape is evolving at a pace faster than our ability to regulate it. Cybersecurity is no longer just an optional thing. It is essential to protect not only our data, but our dignity, our rights, and democracy. In an era where digital domain touches every aspect of human life, cybersecurity is a multidimensional challenge that demands immediate and ongoing attention. An institution committed to contemporary challenges and responsible legal education, I think that truly resonates with the theme of the seminar. To awaken academic and IT challenges, including human-related digital literacy drives and interdisciplinary research, we are constantly engaged with the reality of society. The only other define its mind from the domain of law, technology, and policy to engage in critical conversation that goes beyond the binary. This national seminar will bring to light the pressing challenges posed by the technologies, the increase in the cybercrimes, and explore the legislative and policy remedies to propose innovative strategies to safeguard the digital freedom and national security. We are proud to share that for this seminar, we have received an overwhelming response of 100 plus extended abstracts from across the country, including distinguished contributions from researchers, academicians, and professionals. We are also delighted to announce that the selected abstracts, after a rigorous review process by the internal and external review committees, have been approved for publication in our seminar proceeding books, which will be published with an ISBN. Together, through such meaningful dialogues we aim to lay the groundwork for a secure, equitable, and a net future. Let us be which is necessary for exchange. It is a collective responsibility to mutually after this event, we are delighted to welcome and introduce the Professor Dr. Director of IPEM Law Institute and issues. During the discussion of technology and innovation, now essentially issues. Which dedication to the field of education contributes to data mastery. Man exemplifies dedication and determination that ensures that IPM remains a beacon of quality education and progress. I request ma'am to please come forward for the address.
Thank you, Vivishi. Suprabhat, good morning. Yeah, I do with some people. Good morning again, my esteemed guests, faculty members, and the fellow participants. I think some in India. I love my nation, I love my language also. Topic is very important. I'm very much honored to be a part of this activity because I am also MCA. I know the binary language. Yeah, that's right. But now, what is binary? As Vidyuchi has already told, we have to be protected with the binary also. What we are finding nowadays that network security has been becoming a challenge. That network security because of the hackers or some other things. In this work, one thing is very important. Hello. हम लोग बहुत विद्वान पैदा करते हैं और बहुत सारे विद्वान बाहर विदेशों को भी भेजते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखें तो कैलिफोर्निया is full of whether they are working as a management person or as a cyber or digital person. कितना भी इंजीनियर हमारे यहाँ से कब होके जा रहा है Sorry for the interruption. देखिए हम लोग इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना ब्रेनिंग है वो ब्रेन डिस्ट्रक्टिव भी होता जा रहा है हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं लेकिन उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसका डार्क पार्ट भी है दैट इज नोन एज साइबर सेल जो हमारे को डेवलप करना पड़ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करनी है जब हम लोग पहले पढ़ते थे कि हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा ट्रांसफर करते समय कभी कभी नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा डेटा रह जाता था या कहीं हो जाता था अभी ऐसा नहीं है अभी हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या है इतना सारा डेटा है कि उसको सिक्योर करना मुश्किल हो रहा है उस डेटा को सिक्योर करने के लिए केवल डिजिटल पर्सन नहीं चाहिए इंजीनियर्स नहीं चाहिए वी नीड सम लॉज आल्सो कुछ लॉज ऐसे जिनको बना करके जिनको पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे पास बहुत सारे अगर आप देखें यातायात के भी नियम है हमारे पास सिक्योरिटी के डिफरेंट बहुत सारे लॉज बने हुए हैं लेकिन अभी जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी आपका बहुत सारा डेटा हम जितना ज्यादा डिजिटाइज होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा अनसिक्योर भी होते जा रहे हैं क्योंकि हम जितना भी डेटा सिक्योर करते हैं उसका तोड़ हमारे पास है Hacking is very easy to learn, but trying to understand अगर हम laws को कहीं भी apply कर रहे हैं तो उसको आपको intelligently apply करना चाहिए don't go for कि अगर किसी ने कह दिया कि आप इसमें 6 digits का पासवर्ड रख लो उसने कोई solution आपको दिया और आपने उस solution को accept कर लिया सिक्योरिटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कभी ताला लगा के चले जाना काम नहीं होता है उस ताले को चेक भी करना होता है ये भी देखना होता है उसकी चाबी दोबारा से किसी और के पास ना पहुंचे तो हम लोग को यही आज इसी विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट आई लाइक माय स्टूडेंट्स बी अटेंटिव थ्रूआउट द सेशंस बिकॉज आप जितना आप लर्न करके जाएंगे उतना ही आप सोसाइटी को भी सिखा पाएंगे थैंक यू सर Exploring new devices and conceptualize the ideas. We must acknowledge that this magnitude is not possible without the human guidance of a leader. Dr. Geeti Sharma, Director, IPEM Law Institution, who has not only been a guiding light but also a driving force throughout this journey. Ma'am is an IIFT certified professional, bringing over 2 decades of distinguished experience in education industry. Her expertise spans administration, teaching, student management, and research development, with a proven track record in steering institutions towards excellence, including achieving NAAC grade. She is a recognized editor, reviewer, and author of numerous national and international journals and patents, and she has provided strategic directions
ensuring effective implementation of policies and procedures. She is a member of Academy of International Business, Michigan State University, USA, and a steering committee member of India chapter of Daughters of Tennis, International Network of Women Business Scholars, Greece. She has been the torchbearer in the role of being the patron of this conference. It is with immense pleasure and gratitude that I now invite Dr. U.P. Sharma, Director, IPEM Law Institution and patron National Seminar, to deliver the inaugural address. Good morning, everyone. So I would like to hear a loud good morning from all the students. Good morning, everyone. Okay, so it is with great pleasure I would like to welcome you all to this much awaited seminar on the topic cyber crimes and cyber laws, emerging threats and remedial measures. So first of all, I would like to welcome all the guests who have taken out time from their busy schedule to make their attendance and presence to this seminar, and we are really grateful to all of you. We have with us Professor Dr. Kiran Gupta, who is Professor Law, Central to Faculty of Law, Delhi University. Thank you so much, ma'am, for gracing the occasion. Honorable Judge Meenakshi Ji, who is about to join us in a while. We also have with us Mr. Upinder Thakur, who is advocate at Supreme Court, Professor Dr. Devanshu Srivastava, founder, dean, and Professor G.A. Bajaj, Mr. Santosh Tiwari Ji, SHO Police Station, Cyber Cell Ghaziabad, Professor Dr. Meenakshi Chaturvedi, Dean Research, Trinity Institute of Professional Science, and Advocate Anand Dugarji, who is advocate and a proud alumni of IPEM Law Academy. I think the guests who have joined us, it's a very good blend of policymakers, business professionals, academicians, and we have people from all walks of life, and they deserve a tremendous round of applause for being there and creating this seminar organized by IPEM Law Academy. So talking about the theme of this seminar, which talks about the cyber laws and the cyber crimes. I think the way digitalization is impacting each one of us. So this is something, right, which we were thinking that it is going to come, right? It is soon. It is going to be there. But now it is there. It is posing threats. It is posing challenges, and we are all here to discuss those challenges, followed by remedial measures. I think when it is digitalization, right, it is impacting every walk of life which we can talk about. Be it banking, be it medical, be it healthcare, be it education, be it anything I think which we do nowadays is something which is impacted by digitalization. So the ways at which this digitalization is moving, right? But at the same pace, we are not seeing the laws, the ecosystem, which is going to govern this digitalization is not moving at the same pace. That is where, the gap is. And it is very important that we identify that gap. We delve deep into, the thoughts, the ideas, right, by which we can come out with some measures so that all these challenges, be it, phishing, be it, the privacy breach, be it, we are now, talking about digital arrest. We were just talking in the conference room and SHO service telling that in the last year, only in Ghaziabad, we have been able to report, the threat of digital threat of more than 80 crores. I think it's a huge amount, right? So with these kind of threats coming, already they are entered into our space. So it's very important for each one of us to understand that how to handle it, right? And these threats are not just limited to, the Kokrawala, the normal vendors which are there, right? So we were again discussing the specific threats over here. They are actually, they are starting from an amount which is more than 5 lakhs. Which means कि जो भी लोगों के ऊपर threat आ रहा है, वो सब हम जैसे ही लोग हैं. We are intellectuals, right? We may be experts in our in our own areas, but when it comes to this cyberspace, probably we are also unaware. At times, knowingly, unknowingly, we tend to share our information.
We tend to share our photographs. We tend to share our information. We accept cookies without knowing that what exactly it talks about. And there we get start. So the way the pace at which digitalization is moving, I think at the same pace, the law ecosystem also needs to get evolved. And to delve deep into this area, I think the kind of guests we are here, who are here, right? They are the right people to discuss, to deliberate, and to come out with possible solutions which can help us out to make the digital space, more in a way which is understandable, right? And which is something which strengthens the law ecosystem. So with those words, right, I once again congratulate the organizers of the seminar, the organizing committee, the entire law faculty team headed by Dr. Purnima, all the participants who are going to join us in offline as well as in the online space, and everybody who has joined us this morning. I can also see Dr. Parul Gurudev. Thank you so much, ma'am, for always being here. And of course, all the collaborators with whom we have signed MOU and who are here to give us all kind of support possible. So with those words, thank you so much, everyone. Let's hope that we come out with some very concrete outcomes end of the seminar. Thank you so much and God bless. फोन रखा है देख लेना फोन मत भूल जाना कहीं Thank you so much, ma'am, for those inspiring words. Your vision has definitely set a perfect tone for the day ahead. In a digital era where threats are evolving faster than laws, the expert voices are not only relevant but necessary to guide our way forward. It is my utmost pleasure to introduce our guest of honor, Professor Dr. Kiran Gupta, Professor, Law Center 2, Faculty of Law, Delhi University. Ma'am is a distinguished authority in the field of law. Engaged in teaching and research for the last 4 decades, ma'am holds an extensive knowledge on various aspects of law. Apart from her diverse and elaborate research portfolio, ma'am also served as a regular resource person in various academies and other institutes of repute, and has successfully guided many PhD scholars. It is an honor and privilege to invite our esteemed guest of honor to share her thoughts on the theme. I request you, ma'am, to please raise the stage. What we don't have. All of us are now living in digital era. Earlier, we used to do everything manually, but now our mobile phone and our laptop are doing everything for us. We think that we have got a very easy life now. Whatever we want to purchase, whatever we want to find out, we can just open our mobile phone or our laptop and we will get it within 5 minutes. And now after the artificial intelligence and open GPTs, chatbot, we can even write a book or an article in 10 minutes. What is the nature of that book? How many faults we have? What will be the sources of those citations, the footnotes given in that? We are not sure. And generally, we will find that most of them are wrong. Because they don't bother about the place from where they have taken the material. They create their fake footnotes and we accept these footnotes as true. And when this GPT started, Chat GPT started, people come out with a book on any subject in one day. The book was published. It was highly misused by the educationists. They write continuously, they were keeping on writing books and articles because they have to do nothing. Just have to write topic in the chatbot and they will get
follow the book, and some of them don't even try to verify the content. They believe it. ये तो chat GPT से हुआ है, ये तो कुछ होना नहीं है. Although, let me guard you that whatever we get from chat GPT is not correct. We have to verify. First of all, it is violation of copyright of the people. We have intellectual property right protection acts, patent act, copyright act, trademark act, design act. All these acts are there. Protection of traditional knowledge act. So many acts relating to protection of intellectual property rights. Using these resources, chat GPT or any other kind of chatbot is violation of right of some person. So we have to be careful about that. We cannot deny the fact that we are living in a digital age. And there is no question of now going back from that. It will go forward and forward, only not backward. But we are very, very unfortunate that we are not able to restrict or restrain the drawbacks of this technology. We have very good technicians. We are producing them, sending them all over the world. As has been told by us, by my previous speaker, we are producing very brilliant brains and importing them to other countries, mainly California. Even my son is there. I have also produced one of them. But we are producing and giving them to be used by others. What is the point of producing such brilliant children? We should keep them in our country, but once we send them, they become fair talk. They don't have to bear that child. They don't have to bring up that child. They don't have to educate that child. Every pain and every expense is taken care of by the parents. And when the tree, the plant we have planted become a tree, grown a tree, they are losing the mind of that person, Americans, and then selling the same product to us at such a high price. So we are giving them to work for them and we are paying for their work also. There is now no question of going back from that. But the question is, how can we protect ourselves from these drawbacks of or ill effects of this digital evolution which we are suffering? It has number of positive points. Now we can communicate to anybody, anywhere in the world, and we can communicate with crores of people in the by writing the same day, or by posting it on the Facebook. Using the social media, we can communicate with whole of the world at the same time. But the question is, do we require to communicate with all? What is the drawback of this? Technology, when it develops, it brings with it danger for us. And just like the law, I am not saying that if we enact the law, we have the law, we have Information Technology Act, we have criminal laws for the protection of children. We have POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act. So we have the laws. But when it is done manually, we are not able to properly prosecute the wrongdoer and to punish the wrongdoer. When it is done in digital way, do you think we will ever be able to protect ourselves from the wrongdoer? My answer is no. Whatever law we may enact, we have now enacted Data Protection and Privacy Act.
But are we able to protect our data and privacy? Those who innovate these technologies, while they are inventing the technologies, the others who want to get benefit, wrongful benefit of these technologies, they are more active. They have better brain than the person who have invented the technology. Just like you invent any law, and the lawyers immediately find some lacuna in that law. They will mold the law, they will try to interpret the law. At least they will plead in a different way that no, this law does not mean that. This means something else. And what is the justice delivery system in our country? There is no need to comment on that. It is, we say, कानून अंधा है. अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. कानून अंधा है कि वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, और दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि कानून को कुछ नहीं लिखता, जो आर्ग्यू करते हैं लॉयर्स वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसमें भी जितना उनको समझ आता है वो अप्लाई हो जाता है जजिस के लॉ. दोनों मीनिंग है उसको. यहाँ तो इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का तो इसको रेगुलेट करने का कोई थोड़ नजर नहीं आता. And the main issue is that we cannot find out or decide the jurisdictional issue in cyberspace. A person sitting in any country, any very small country, बिल्कुल तो underdeveloped country है, can commit something which may affect the whole of the world. And it is very difficult to find out from where the act has been done and which court will have jurisdiction. Say something sitting in West Indies, in an island in West Indies, has done something wrong. Now, he may be having the server at some other place, maybe using the internet facility which is there in some other place, blockchain technology, cloud computing and all that. And I sitting in India suffer loss. Which court can I approach? Wherever I will file the case, there will be a counter argument that this particular court of this country has no jurisdiction to deal with this because the mail server is in that country. The person who has done the wrong was in some other country. Then there is no direct link. So our courts have now laid down various rules for determining the jurisdictional, for solving the jurisdictional issues. But till date, no uniformity has been found. Still there is a need of laying down the law for uniform application or solving of jurisdictional issues in cyberspace. So far, we don't have that in any of the law. Whether it is Indian or other countries, the law is judge-made. And they decide from case-to-case basis. Sometimes, if there is a group of cases decided in one way, and we say that judiciary has developed this particular rule. But they are different. There are different rules which have now been developed for deciding the jurisdictional issues in cyberspace law. It is very difficult. All of us know cyber hacking, cyber extortion, phishing, this and that. Now the new concept has started, cyber arrest. Somebody will call you that I am speaking from CBI, I am speaking from PD, I am speaking from Custom Department. There is a parcel in your name which contains the parcel contains the narcotics and something like that, and you are to be arrested for committing
for exporting these prohibited items and all that. An innocent person like us, a common person like us, we will feel better. हमें लगेगा कि वो सच्ची कह रहा है, हो सकता है हमने नहीं बुलाया, किसी ने देख लिया हो हमारे नाम से, and we may be in trouble, and they will keep on threatening you by calling number of times. Even they will call you on video, and they will keep you can say in your own house under cyber arrest. आपको वो डर सताता रहेगा. Then they will start extorting money from you. इतना पे कर दीजिए अभी इतनी देर में इस अकाउंट में, otherwise we are going to come to your house and arrest you. And then it will be, your life will be a hazard. So हर शरीफ आदमी अरेस्ट से डरता है. Senior police officer is with us, but still I can say पुलिस की धमकी से हर कोई डरता है. Police is for our protection, but we are very afraid of police. So if we have the capacity, we will definitely pay the wrongdoer. चलो ये पीछा छोड़ो, इतने पैसे लो, तुम स्मगलिंग वगैरह में मत फंसाओ. And it is not, as has been told by DPG, that it is not that the illiterate people are suffering from these problems. Even the literate, and I can go to the extent of saying that not literate of our age, but even the younger generation who know how to use this digital technology. We don't have much idea. हमें काम चलाओ knowledge है अपनी. कि हमें मेल भेजनी है, मेल पढ़नी है, आर्टिकल पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, उतना ही पता है. उससे ज्यादा हमें नहीं पता. But the younger generation who knows in and out of क्या कौन सा ऐप कैसे यूज करना है, क्या हो सकता है, even they got defrauded by these apps. There is a practice, new practice, not very new, काफी टाइम से चल रही है. Someone will call you and say that I know your father. तो आपकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड बताएगा और आपके बात करते करते आपको इतना हिप्नोटाइज कर लेगा. Then he will say, आपके फादर ने कहा है, अब मुझे उनको फादर को पैसा देना था, तो फादर ने कहा मेरे बच्चे के अकाउंट में डालना. पेटीएम होता है ना, या गूगल पे, पेटीएम, मेरे फोन में तो है नहीं, लाइक आई डोंट हैव इट इन माय फोन. सो व्हाट आई विल से इज, मेरे बच्चे के अकाउंट में डाल दो. अब ठीक है, कैश वैश कहाँ मिलते मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे. So they will, without know, I don't know that fellow. They will say to my child कि मैंने उनको बोला है कि मेरे बच्चे के अकाउंट में डाल दें. और जब तक वो बात करते हैं, बच्चा इतना हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको पता है अकाउंट में पैसा डालना है, तो सिर्फ फोन नंबर दे दो, अपना पिन में नहीं बताना है. लेकिन इतना हिप्नोटाइज हो चुका होता है बातों से, इतनी प्यारी प्यारी बातों से, कि उससे वो जैसे तैसे पिन भी पूछ लेते हैं और इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग पैसा निकाल दो, साफ कर देते. तो हम जैसे बुढ़े लोग नहीं सफर कर रहे इससे. हमारी जो नई जनरेशन है, who are well versed in this digital technology, they sometimes get suffered because of that. Question is how to stop all that. We have so many awareness campaigns going on. जब भी आप टीवी खोलिए, रिजर्व बैंक की वार्निंग आपको आएगी, जागो ग्राहक जागो आएगा. These matters क्या कंज्यूमर, तो we have to be careful. सब कुछ सारी कंपेनिंग होती रहती है, लेकिन जब एक्चुअली होता है ना, तभी पता चलता है कि ये कुछ एक्चुअल चीज है. रिजर्व बैंक की जब भी हम सुनते हैं, हम यही कहेंगे हम कौन सा किसी को ओटीपी देते हैं. ओटीपी आता है तो हमारे लिए आता है, हम अपने फोन में यूज करते हैं, अपने लैपटॉप में यूज करते हैं, हम कौन सा देते हैं. पर पता
नहीं वो कैसे हिप्नोटाइज करते हैं कि हम ओटीपी भी दे देते हैं हम। So to prevent all these, what is required is that, in my view, of course, stricter laws have to be there. We now have Data Protection Act, but how much useful that act will be, we are not sure of that. Laws we may enact much stricter laws. किसी ने ऐसा कुछ किया तो उसको ये पनिशमेंट होगी, जेल में डालेंगे, फाइन लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोसिक्यूशन कितने लोगों का होता है हमारे कोर्ट में? तो केसेस बहुत फाइल होते हैं, कंप्लेंट भी बहुत होती है, लेकिन एक्चुअल प्रोसिक्यूशन कितने लोगों का होता है, दैट वी हैव टू बियर इन माइंड। और उस एक्चुअल प्रोसिक्यूशन की स्टेज तक जाने के लिए कितना सफर करना पड़ता है विक्टिम को, we know it very well. So mere enacting the laws is not sufficient. They are required. We have proper laws, proper regulations and rules for enforcement of that law. We have to have proper enforcement agency. No denying this fact. But what is more required is awareness, and we must be, मतलब हर वक्त हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उसको हमसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। We have to be conscious while dealing with our accounts. As far as this is concerned, rights of women. There are number of crimes which were cyber crimes which were done against women, like cyber stalking. It is an offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita. It was also an offence under the Indian Penal Code. Specific provision deal with it. Mere physical stalking is not punishable, but if somebody is looking after my or stalking my internet services or my internet communication or my social media communication, even that amounts to stalking, and there will be punishment. For the protection of children, male or female, we have POCSO Act, and provisions of POCSO Act are very, very strict. These offences are cognizable and non-violable, and there is no need to file a complaint by the victim. Anybody who comes to know that a cyber crime against sexual cyber crime against a child is committed, we have the responsibility to intimate the authorities. It is mandatory for all of us, but still it is going on. So what I want to convey is awareness, campaigning about these rights and wrongs which may be committed is the need of the hour. We have to be very, very cautious. We can say the state authorities are there to protect us, but it is first our duty to protect us. So this is what I would like to thank the organizers of this seminar for giving me this opportunity to meet you. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, ma'am, for highlighting the challenges posed by this technology in the digital era, especially when human intellect is juxtaposed with the artificial intellect. Moving ahead, it gives me immense pleasure to introduce the thought-provoking panel discussion that has to be held today on the theme of cyber law in the age of AI and automation, redefining legal boundaries. As technology continues to evolve at an unprecedented pace, we find ourselves at a critical juncture where traditional legal frameworks are being tested with the rapid rise of the artificial intelligence, automation, and data-driven systems.
cyber law, once centered around internet regulation and digital crime, must now expand to address these difficult concepts. This panel discussion has been curated to bring together experts from legal field, academia, and enforcement domains to delve into these evolving dimensions and to collectively envision a legal ecosystem that is not only reactive but also resilient and forward-looking. I would like to take a moment to recognize and felicitate our esteemed panelists for the day, whose invaluable contribution to the legal domain deserves appreciation. I would like to invite Professor Dr. Suvarna Goldbaum, Executive Director, to facilitate Mr. Upendra Thakur, Advocate, Supreme Court of Delhi. States Greater Noida, Uttar Pradesh. Thank you so much. Now I'd like to take the opportunity to introduce this prestigious panel to all of you. We have in the panel Mr. Upendra Thakur, Advocate, Supreme Court of India. Mr. Thakur University of Delhi in 2006. Since then, he has been actively participating as an advocate across various esteemed judicial forums, including Supreme Court of India and High Court, and multiple tribunals and commissions. His legal practice spans across a wide spectrum of forums such as TDSAT, DRT, NCLT, NCLAT, Consumer Forums, Green Tribunal, Competition Commission, etc. As a founder of the Law Chambers of Upendra Thakur, he leads a team dedicated to provide strategic and specialized legal service
in constitutional, commercial, and technology-related matters. Mr. Thakur's spiritual experience combined with his advocacy in the emerging fields like cyber law and digital regulation makes him an highly valued voice in the time. We have She has many Hello. Hi, this is Anand.
And the first question is, in your experience, how well equipped in our current legal framework, such as IPA and DPA, to handle the issues like allographic basis, AI-generated harm or lack of transparency in automated decision making? The audience. Can anybody? Yeah, please. Hello, hello. Good afternoon, everyone. Now, no, good morning. So basically, today the topic is so sui generis, so that we should have some foundation. So to understand the foundation, just it's interactive session. So I would like to just strike the gambit by asking the gathering here that have you read the salient provisions of Information Technology Act? If you raise your hands, then I will be like, I'll go deep into it, or otherwise I'll be just on the surface. You have read Information Technology Act? Just you have the fair idea of Information Technology Act. Who has a fair idea? Please raise your hands. Yes. Quite a number of them. So basically, the Information Technology Act was initially brought to the Indian system to give sanctity to the digital documents. That was the journey which began. Now see where we have reached. Now from giving sanctity, now to giving protection. Now we are trying to protect going on. Because now we have entered the cyber attack field, where the battlefield is invisible, but the damage is real. That is the thing which is going on. So, but just to strike the gambit, I would say the Information Technology Act is there, and Information Technology Act provides two links of remedies. Two links of remedies for everyone whosoever is the victim of cyber crime, cyber fraud. So you know what is cyber crime, what is cyber fraud? Anyone has the fair idea? Cyber crime is basically, it is defined under Information Technology Act. If you use a computer system, computer network that is situated here in India, and the offense can be committed anywhere throughout the world. Because Information Technology Act is the brainchild of UNCITRAL model. There are signatory countries, 85 signatory countries. So it was adopted, like I said in the beginning, to give the sanctity. So now there is Section 75, you can please make a note of it. Section 75 of IT Act that gives extra territorial jurisdiction to the courts of India. So in a case like crime is being committed by some, like Ma'am was saying, that someone is sitting in far off country and he's committing a crime. So how to punish that particular person? That Section 75 takes care of it by giving extra territorial jurisdiction to the courts of India. So you have to just see the ingredients. If those ingredients of offense are met, very well. If not, then in that case, ID Act is there, the law is evolving, so that is how it is taking place. Now, two links are there. First link is people don't know about it. Even like me, there are lawyers also. If I ask them, they don't know what remedy they have. If the some amount is siphoned off from your account, what remedy you have? You will directly call, please, 100 number or whatever it is. You will call and then you say, oh my, this much amount is gone. But then you will not have the knowledge of going for the civil remedy. There is a civil remedy also under Information Technology Act. For that, the only restriction is up to 5 crores can be brought to the cognizance of adjudicating authorities. Every state, in every district, there are adjudicating authorities. आप वहां पर complaint file कर सकते हैं, right? 5 crore तक की limit है. Why this 5 crores limit? Because people won't have that much funds in their account. So that is the limit, 5 crores.
commonsensical. So then you go there. So there are various elements. How many elements are there? There are someone who has committed the crime. All right. There is someone who is facilitating the crime. There is someone knowing unknowingly, like intermediaries. It's the definition of intermediary also. Like nowadays, what are intermediaries? Those who are facilitating it, like bankers are intermediaries. In the basically transaction between the bank and the person who's the intermediary, telecom operators, who have given the SIM to them. So this is how it is happening. So there is liability, and there is a provision of safe harbor that intermediary won't be liable. So you should know the players. And in one case, which I was doing, just to make it interesting, it should not be mundane, so that I can share my practical experience. So what happens that in a case, which was basically, now I'll come to the case later. First, let me tell you the remedial measures. Civil remedy, adjudicating authority, I'll again come back to that. If you are not satisfied with the whatever the adjudication by that adjudicating authority, what remedy you have? Answer is Finance Act of 2017. The Finance Act of 2017 has bestowed the jurisdiction on the TDSAT, where I'm an active practitioner there. That is called Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. So you can go there to file appeal. Okay. So while there was a matter there, so in one of the cases, it's a landmark case. In that case, what happened that someone basically stole the phone number. They made a request for duplicate SIM, whatever. I will not go into the factual matters. They got the SIM, and thereafter they did transaction, and then they siphon off the money from someone's account. That victim approached the adjudicating authority. So the adjudicating authority said no. Telecom service provided, TSP we call them. TSP won't come under the purview of intermediaries. As per section 79. So that was the issue before TDSAT, Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. TDSAT took this view that no, it is provision under section 43 of the Information Technology Act, which says that you have to have due diligence. You should secure the data of person, that data. And data now, then comes the Digital Data Protection Act. It is related to that section 43. It's very important. Like, this is the way of basically reading any legislation to connect them. To basically read in connection, then it becomes beautiful. So then the TDSAT took this view that no, there is a contributory negligence even on the part of the telecom service providers. That's the case. In that contributory negligence was cast upon the telecom service provider. I handled that case. So that went to the Supreme Court, but Supreme Court did not even. So that is the law of the land. I'll give you the citation. You can take copy if anyone is interested. So this is how it is evolving. This is one remedy. Because this will take care of your damage part. If the money is gone, how will you get the money? Like ma'am has raised very good point. Extraterritorial jurisdiction. Okay, you have the remedy, but it's in the paper. How will you enforce it? This is the way to enforce it. So you have to be aware. Ignorance of law is no excuse. As the student of law, we have to know where the remedy lies. So this forum will take care of your damages. Then get your damages. Otherwise, what will happen? There was this, you might be knowing about Ghaziabad cryptocurrency scam. When so millions of dollars they were siphoned off. They used that software. I think some technicians also there. Tornado, it's gone. Yes, yes. Never came back. So how to get the money? So that one link is civil remedy. Other is criminal, of course. He's here. He's the expert there. But then you have to, the law is evolving, like everyone said, Dan also said in the beginning, we don't know about where the remedy lies. In that case, there is a provision under information technology only. I'll just sound positive, because if I sound gloomy, then we'll go nowhere. So I'll just go on the positive note that there are remedies available. Even Information Technology Act states that in those cases,
whose offences are not defined under Information Technology Act, then you will take the shelter from other acts. So you have to remedy. Only those ingredients are met, can raise that particular thing. That rural remedy is another. But it is basically in the case of cyber, what do you say? That you should understand the offense. Understanding the offense is the defense in the case of cyber. अगर आपको पता ही नहीं offense कैसे हो रहा है, because in the case of cyber, they are not like some criminal, hardcore criminal. Anyone can be between you. Among us, they might be sitting here. Your own friend, because your face is hidden, face is not visible. So anyone will dare to act. Yes, I can do that. That is the basically risky factor in the case of cyber attack, cyber activities, whatever cyber. So basically, the topic is going one step ahead. It is about artificial intelligence. So basically, first, that is the foundation of understanding Information Technology Act. And then you have to go one step ahead, because so far as artificial intelligence is concerned, we don't have any legislation. We only have the paper of Niti Aayog, and that is only basically that is not even recommendation. That is just a paper, guidelines you will follow. Other countries are coming out with the legislation on artificial intelligence, and the leading from the front is European Union. European Union has a very beautiful legislation, 59 pages. Kabhi time lage to padhna, it's very nice, very exhaustive. They have laid down everything associated with artificial intelligence. And even I think let's take the input from other panelists. yes, no, the first question was there, artificial intelligence. So may I address that first question? Because we were asking yes. So let me see what was the question. Let me see. So let's take input from Spicer also, and then we can go back. Please carry on. I'm sorry, I'm just Overall, the personal awareness is important. You know, whatever the crime is there, we should know about what exactly your personal responsibility towards that crime is. Are you aware with that crime? That matters a lot. Sir, please go ahead. Hello. Jai Jayan sir. मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी ज़्यादा मैं आपको वो जैसा टॉपिक मुझे बताया गया था सेमिनार के लिए एआई का क्या लॉ में इफेक्ट होगा आगे चल के और कैसे हम इस लाइन से कैसे बात ये मेरे ख्याल से टॉपिक था तो देखिए आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लॉ के स्टूडेंट हैं सारा आप लॉ पढ़ेंगे सारी पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल बात क्या सबसे पहले तो एक जो हम लोगों के अंदर में मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस बात में तो एक हम लोगों के मन में पुलिस के प्रति जो बैठा हुआ है ना जैसे मैंने कहा ये बहुत बुरी है हम लोग ना पूरे मेरे 23 साल के कैरियर में मरे जा रहे हैं मित्र पुलिस बनने में पुलिस से मित्र पुलिस बनने में मरे जा रहे हैं लेकिन कोई मांगने की तैयार नहीं होता कभी भी लिफ्ट में अगर यूनिफॉर्म में मैं आता हूँ तो कोई छोटा सा बच्चा रहेगा तो उसकी मम्मी कहेंगी देखो गलत मत करना नहीं तो हम अंकल को बोल देंगे कभी ये नहीं करते कि अंकल है तुम प्रोटेक्टेड रहोगे अगर अंकल कभी आसपास दिखाई दे तो तुम सेफ हो ये हम कभी नहीं डालते तो छोटे से ही डाल देते हैं सब चीजें और यही ये मैं आपके सब्जेक्ट से बाहर की बात कर रहा हूँ ये मैं साइबर फ्रॉड पे ही बात कर रहा हूँ इसी थ्रेट को इसकी साइकोलॉजी को यूज कर रहा है एक लेडी है उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं सीएमओ से रिटायर्ड वो सिर्फ इस बात से डर गई कि मेरे घर में पुलिस आएगी तो मुल्ले को क्या जवाब दूं तुम्हारे अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है ये है वो है ने बोला और सारी चीजों बोली मुझे जाना है बच्चों उनके वो ऑनलाइन बैंकिंग यूज करती थी कोई नहीं तो उनको जाके बैंक से पैसे डालने थे तो क्या मतलब वो बैंक से जा नहीं सकते हम पुलिस भेज दे रहे हैं आपके यहाँ तो वो एकदम डर गई वो बेचारी बीमारी खबर जाके और आरटीजीएस करके पैसे डालती है उसको तो पुलिस का जो ये थ्रेट है ना ये बहुत बुरा है इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा अब ये थ्रेट क्यों है हम
मेरी अपनी सोच है, ये हो सकता है सही भी ना हो, काफी दिन तक गुलाम है। तो हमने जब आजादी पाई तो हम सबसे पहले नियम तोड़ने पे ही चले आते हैं। हम जब भी थोड़े से एम्पावर होते हैं, पहला काम करते हैं कि नियम तोड़ दें, क्योंकि हमने वो आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, वो नियम नमक कानून तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, तो हमने वो सब अपने डीएनए में डाल दिया है। सब तोड़े, जैसे ही हमें पावर तोड़े, थोड़े से पावरफुल हुए तो हमारे वो ये सिग्नल पे हमारी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, थोड़े से पावर हुए तो हमने अपनी गाड़ी को पुलिस दिखवा लिया कि हमारी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़े से पावर हुए तो हम बताएंगे हमारे इनकम फलाने हैं। हाँ, ये हमारे नेचर में है, इससे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम सारे फ्रॉड से और बाकी चीजों से भी बचेंगे, हम डेली की चीजों से बचेंगे। हम हेलमेट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते भाई? आप पुलिस वाले से क्यों डरते हो? इसी का डरते हो ना, हेलमेट ना वो चालान कर देगा। हेलमेट लगाओगे तो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं रोड में, उसमें 90% हेलमेट नहीं से बनते हैं। सीट बेल्ट लगा के 10 बजाते हैं। अभी अभी कुछ दिनों कल या परसों में न्यूज में देखा था, 3 लोग जा रहे थे अयोध्या दर्शन करने के लिए, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया था, उसके बगल में बैठा हुआ था उसने नहीं लगाया था, लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ और वो 2 लोग तुरंत वहीं पे एक्सपायर हो गए। जिसने सीट बेल्ट लगाया था वो, अरे जो पीछे लेडी बैठी थी वो बचे, बाकी ये है हमारी आदत। एआई को लेके हम लोगों के मन में बहुत सारी चीजें हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे क्या एआई यहाँ पे भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले हम लोग ऑफलाइन डिस्कशन कर रहे थे, ये जो आपको मोबाइल है ना, ये कोई सा भी मोबाइल, ये सारा एक्सेस दे रहा है, आपने नेट ऑन रखा है, सीरी चल रहा है, गूगल असिस्टेंट चल रहा है, पिक्सबी चल रहा है, पता नहीं कितने सारे और ऐप हैं। ये तो वो ऐप है जो रिकॉग्नाइज है। आपको मालूम होगा कि सारे जितने भी रिनॉन है, इन लोगों ने काफी फाइन पे किया है प्रीवियसली को लीकेज को लेके, अब सब अवेयर होते हैं। तो आप ये चीज जान के चलिए कि अच्छा अब एआई का आपके इस लॉ में और इन सब चीजों में क्या पढ़ने वाला है सर। ये तो अभी आपको बहुत दूर तक सोचना है। थोड़ी देर पहले मैंने एआई हम लोग एटम बम की बात हम लोग कर रहे थे, जब एटम बम बना, जैसे एआई होगा तो क्या होगा, पुलिस में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम उसे कंट्रोल करेंगे, जैसे हमने एटॉमिक पावर को कंट्रोल किया। ऐसा तो नहीं है कहीं की कोई भी कंट्री पर एटॉमिक पावर कहीं पे भी फोड़ दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम उसे अच्छी चीजों यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक वैसे एआई है। अभी एआई के बहुत बुरे परिणाम भी हम लोगों को तैयार रहना है झेलने के लिए, उसके बाद हमें सबक मिलेगा। एआई के पास डाटा तैयार हो गया पूरा। हाँ, एआई हमारी इस बात को भी कहो कहीं कहीं से पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जैसे आप चैट जीपीटी है, ये सब है, फ्रॉड जीपीटी भी आ गया है। आप में से कितने लोग अवेयर हैं इस बारे में, फ्रॉड जीपीटी के बारे में? कोई है अवेयर? नहीं, गूगल करिएगा, वो आपको सारे हैकिंग के इसके उसके सारे कोडिंग कोडिंग आपको दे देगा, वो पूरा कैसे पासवर्ड क्रैक करो, कैसे क्रिएट करो, कैसे वो भी आपको बता रहा है। बेसिकली एक टूल है। अब आई बात आईपीएम में, आपको कैसे इसको प्रोसिक्यूशन में, कैसे इसको रजिस्ट्रेशन में, कैसे इन सब चीजों को होगा, तो आप बेसिकली समझिए। मर्डर चाहे वो यूएस सिस्टम से करे और चाहे इंडिया के कट्टे से करे, फर्क नहीं करता। फाइनली ये आता है कि वो वेपन कहलाता है, मर्डर वेपन, और जिसने मारा उसकी नियत और वो व्यक्ति आता है। तो सोर्स और अकाउंटेबिलिटी सारा लॉ इसी पे काम है। फाइनली कोई भी चीज आप कंटेंट तैयार करते हैं, कुछ भी एआई के थ्रू करें चाहे जहां से करें, किसी न किसी प्लेटफॉर्म में डालें, किसी न किसी सोर्स के थ्रू, हम उस सोर्स पे काम करते हैं उन चीजों पे। अब रही बात आप लोगों की, आज की डेट में मुझे 1 साल हो गया है, 1 साल कुछ महीने हो गए हैं साइबर क्राइम में जब से थाना बना, तब से सेक्टर बने हुए, और लगभग 400 से ऊपर केसेस हमने रजिस्टर कर लिए हैं अब तक। 85 के आसपास क्रिमिनल हमने अरेस्ट करके भेजे भी हैं। 86 करोड़ का हम लोगों ने लास्ट ईयर रजिस्टर किया था अपने थाने में। लगभग 24 करोड़ रुपए हमने लोगों के रिफंड भी कराए हैं क्रिमिनल केसेस के थ्रू ही, इसमें से कोई भी चीज उसमें नहीं गया है। दो चीजें होती हैं जब आप एज एडवोकेट कल को आप जाओगे। देखिए, ये जो हम लोग की जनरेशन है ना, इस जनरेशन ने सब कुछ देखा है, बिना मोबाइल की दुनिया देखी है, मोबाइल की दुनिया देखी है,
इंटरनेट की दुनिया देखी, फिर व्हाट्सएप की दुनिया देखी, अब ये आपकी एआई की दुनिया देख रही है। तो मैं तो अपने आप को प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि हम सारी चीजों को देखने प्रवृत्त होते हैं, और इसका हमारे समाज पे और इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी देख रहा है। बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत और ये आ रही है कि हम में से बहुत सारे लोग इन सब चीजों के प्रति अवेयर नहीं है। हम ही आज की डेट में हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम ही आज की डेट में हैं जो लॉ बना रहे हैं, हम ही आज की डेट में हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट हम सबसे कम अवेयर है। जैसे मैम ने कहा, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अगर ये कहें कि मैं पेटीएम नहीं यूज कर रही हूँ, तो ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी ना। हाँ, हो जाएगी ना। हमें तो हर चीज यूज करना है। अगर जैसे मेरे फादर हैं 85 ईयर्स है, वो रिमोट नहीं है, ठीक से चला पाते हैं और यूज कर पाते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा बेटा आज की डेट में 22 ईयर्स का है और बेटी मेरी 12th में है, वो तो जो गेम खेलते हैं ना अपने मोबाइल में, वो गेम डाउनलोड कर लेता था। मैं हमेशा उनकी वेबसाइट में चलने की कोशिश करता हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं, उनके जो शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं, मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ मुझसे भी वो चीजें शेयर किया करो, वरना तुम लोग क्या बात करते हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली ना हमें लॉ को और इन सब चीजों को उसी हिसाब से क्रिटिकली करना है। आप कल के लॉयर हो, आप कल के लॉयर हो। मुझे ये कहने में बहुत मतलब कोई गर्व की बात नहीं है। आज के डेट में आपके मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स, मैक्सिमम लॉयर कुछ भी नहीं जानते इसके बारे क्योंकि डॉक्टर दिव्यांशु और आप इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, में। और डॉक्टर दिव्यांशु जो है इनटू रिसर्च एंड ऑल, राइट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। अब हमारा जो लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है और जो हमारे पास आज की डेट में लॉज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके अंदर क्या क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लॉ आज की डेट में? मैं आपको वही हाँ बिल्कुल डॉक्टर दिव्यांशु को तो प्लीज नहीं मैं पहले इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आदत एक खराब है, पुलिस वाले जो है ना वो बोलने कम देते हैं। तो कहते हैं भाई काम किया बता दिया, आपने से जो व्यक्ति आता है हमारे पास जो प्रॉब्लम लेके वो अपनी पूरी रात कहानी सुनाना चाहता है, हमें कहता है नर्से ने बता दिया बाकी आगे बढ़ भी जाता है। तो ये हम लोग की आदत है। मैं जब सीबीआई में गया तो 5 साल में अपनी इस आदत को काफी सुधारा, इसीलिए मैंने काफी देर तक सर को भी क्लियर किया, उनको भी क्लियर किया, और उसके बाद मैंने फिर बाइक पकड़ाया था। तो ये कुछ प्रोफेशनल हजार्ड्स हैं वो आ जाते हैं लोग। हमारे पास एक नोट आया और उसमें टाइम कंस्ट्रेंट है। हाँ, तो मैं आपको मैं उसी बात को बोला था, आपने मैं वहीं पे ले आया था जो आप पूछ रहे हैं, वो वहीं ले आया था कि आप कल को जब आप लॉयर बन रहे हैं तो आपको क्या चीजें से आप अपने आप को एनरिच करिए, क्या नॉलेज आपको, ताकि आप वास्तव में वो चीजों को हमें अपने सीखना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि हम लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल जरूरी है सर, देखना चाहते हैं आपके लिए भी जरूरी है रिसर्चर एज वेल एज बिल्कुल है, हम तीनों बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को हाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज की डेट में मैं वहीं पर आ जा रहा हूँ जहाँ से इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैक्सिमम लोग और बीइंग ए लॉयर मैक्सिमम लोग आईटी एक्ट 2-4 धाराएं से कुछ नहीं होने वाला, वो उसके पीछे जाएंगे कैसे हो रहा है अपराध। वो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहां पे क्या करोगे, ना तो आप किसी को डिफेंड कर पाओगे और ना ही किसी को प्रोसिक्यूट कर पाओगे। आपको अगर आईपी नहीं मालूम है, आपको डिवाइस के मैक आईडी नहीं मालूम है, आपको कैसे उससे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कैसे हम उसको लेते हैं एविडेंस को, वो नहीं मालूम है। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी, मतलब आपको टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं है, तो फिर आप ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। देखिए मर्डर के अगर आप केस को जाके फ्रेंड वहां पे डिफेंड कर रहे हैं या प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मर्डर कैसे होता है और क्या होता है, बट आपको क्राइम साइबर क्राइम नहीं मालूम है कि कैसे होता है, तो आप वहां पे जाके नहीं कर पाएंगे। अभी आज के डेट में अगर आप जाते हैं, जैसे ये सारी चीजें हम लोग के सामने ही बनी है कि पहली बार केस आया, हमने पहली बार न्यायालय में दिया, वहां जाके जज साहब को समझाना पड़ा कि साहब कैसे पैसे वापस होंगे, कि कैसे पैसे हमारे रिटर्न होंगे, आप कैसे ऑर्डर करो। वरना ये होता था कि अगर आपने भैया आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने 1 करोड़ रुपए इनके खाते में डाल दिए, ठीक है, दिख तो यही रहा है फिजिकली, क्यों डाल दिए, कैसे डाल दिए, वो सब तो कहानियां एविडेंस के थ्रू हमें डालनी है, तब पता चलेगा। वरना तो दिख तो यही रहा है ना कि आपके खाते से आपने अपनी मर्जी से इनके खाते में पैसे डाल दिए।
अब बताइए, ये तो एक आपका एलिगेशन है देन कि आपके साथ उन्होंने फ्रॉड करके पैसे लिए, ओनली एलिगेशन ना। अब उस एलिगेशन के बाद जब तक हम इन्वेस्टिगेट ना कर लें, जब तक हम उसे चार्जशीट ना कर दें, और जब तक वो ट्रायल में ये चीज साबित ना हो जाए, तब तक आपका वो एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ, तो पैसे का राइट कैसे बनेगा? अब वहां पे हमें ये बात करनी पड़ी कि नहीं सर, ये फ्रॉड का है, ये आप इसको वापस करिए, फिर श्योरिटी वापस करिए, आप उससे बॉन्ड ले लीजिए, उस चीजें को ले लीजिए। तो अब वो ऑर्डर इस तरीके से हो रहे हैं कि आपके मान लीजिए 10 लाख रुपए इनके खाते में गए हैं, तो 10 लाख रुपए की श्योरिटी ले लीजिए कोर्ट, और उसका उसको रिफंड करा दीजिए। अगर ये कल को आते हैं और आके न्यायालय में अपनी इस ट्रांजेक्शन को जेन्युइन साबित करते हैं, तो ये पैसे हम वापस करवा देंगे। तो ये सब चीजें ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो इस तरीके से चीजों में अब रही बात साइबर, अगर आप फ्रॉड के बारे ज्यादा अवेयर हैं, आप जैसे कितने लोग हैं जो मोबाइल लेते समय सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या सिक्योरिटी है और ये हमारा मोबाइल कितना प्रोटेक्टेड है, आप जानते हो? आप इसका वो देखते हो क्या, कितने पिक्सल का कैमरा है, कौन सा मॉडल है, या तो आप अगर आप आईफोन वाले हो तो आप सबसे पहले जो सबसे टॉप वाला ब्रांड आ होगा, अगर आप लेने की कैपेसिटी तो आपको उसको आप करने के लिए लेना चाहोगे, या कोई और, या आप किस चीज में सेल्फी कैमरा है वो देखते हो। बट आप में से कोई भी ये नहीं देखता ये नॉट से या किसी चीज से सिक्योर है कि नहीं आपका मोबाइल। आपका मोबाइल आपके सबसे बड़ा एसेट है आज की, आपको इसका एहसास नहीं है। अभी मैं मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, बट मैं यहाँ से निकल के जाके कपड़े ले सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जानते हैं सारी फाइनेंशियल लॉस में सब कुछ इसमें है। बट हम इस मोबाइल को एक ऐसी मोबाइल लेकर लेते हैं, या तो ये सोचते हैं कि कौन सस्ता वाला है वो ले लो, हाँ, या फिर आप ये सोचते हो कि ये किस कंपनी का है, ये चाइना वाला है, ये कहाँ का है, या कैसे है, ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, आप इस पर कभी थॉट नहीं आते। एक अभी मुश्किल से 2 दिन पहले की बात है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और उन्होंने जो है वो उनके साथ में 18 लाख रुपए के नीचे निकल गए थे। कैसे निकल गए सर? मैंने ओटीपी बताया, मैंने किसी को ओटीपी बताया, मेरे पैसे निकल गए। अब वो पैसे से, और उनके पास मोबाइल का था, वो EMI का मोबाइल लिए हुए थे, उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी ना कोई थी। उन्होंने एक कोई एपीके फाइल डाउनलोड की थी एक हफ्ते पहले, और सारे पैसे उसी से उनके हैक करके बाहर निकाल दिया था। तो ये चीजें हैं। बाकी सर एक होता है इंटेंशनल ट्रांसफर, एक होता है रॉन्ग अनइंटेंशनल ट्रांसफर। मेरा सर इतना क्वेश्चन है आपसे कि जो अनइंटेंशनल ट्रांसफर है, क्या वो भी उसी के एम्बेट में आ रहा है, उसी के दायरे में आएगा? जैसे मैंने रॉन्गली किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, और अगर मैं डिमांड करता हूँ और वो वापस नहीं करता। देखिए, ये दोनों ही बातें एलिगेशन का हिस्सा है जी, ये दोनों ही बातें एलिगेशन का हिस्सा है। और हमारे क्वेश्चन का भी ये आप ये नहीं एलिगेशन, जब आप कभी किसी ने फ्रॉड की एलिगेशन देते ना, एफआईआर एलिगेशन ही तो है। तो एलिगेशन में आप क्या बोल रहे हो, वो चीजें प्रूव होंगी तब होगी, पैसे आपको वापस होंगे तो श्योरिटी होंगी, वो चाहे इंटेंशनल हो चाहे, अच्छा जो इंटेंशनल भी होता है वो भी इंटेंशनल ना होते, वो किसी इन्फ्लुएंस का होता है। अगर आपको कोई हिप्नोटाइज करेंगे या कोई किसी भी तरीके से आपको फ्रॉड वाले जो में फंसा के पैसे अगर देता है, तो वो आप इंटेंशनली मतलब आप उसे अच्छे उसके साथ में नहीं वापस पैसे दे रहे हैं ना, तो वो भी तो एक क्राइम का हिस्सा है। तो आप कोई मोबाइल आपका हैक करके अनइंटेंशनली पैसे ले लिए या फिर वो इंटेंशनली आपको इन्फ्लुएंस में लेके और आपको फ्रॉड का शिकार बना के पैसे दिए, दोनों ही चीजों में आपके ठगी शिकार हुए। तो टेक्निकली वो दोनों में सेम है। तो हमारे पास क्या लॉ अवेलेबल है? लॉ वही है आपका एडिट और जो धारा है उसमें वो जो कवर होता है उसी का हम एफआईआर लॉन्च करते हैं और उसी में फिर आगे हम एविडेंसेस कलेक्ट करके चार्ज करते हैं हमारी। मेरा क्वेश्चन मीनाक्षी चतुर्वेदी से है। हम सर प्लीज। जो आप भी कह रहे हैं बहुत बड़ा अकाउंट में से सत्तर जाता है, तो इंडियन है क्या अमाउंट दे सकते हैं? तो ये अमाउंट या चल रहा है, इसका एक बेसिक है कि आजकल जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है कि वो आपके सिस्टम का क्लोन बना देते हैं और जिससे वो लोग आपके पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड कर देते हैं। हमेशा आपके पास क्या है, फुल टाइम आप देखिए कि क्या लोग आगे चल रहे हैं, क्या हम लोग करके अपना वाईफाई हमारा हमेशा ऑफ रहेगा, क्या हमारा ब्लूटूथ हमेशा ऑफ है। गाड़ी में गाने सुने तो हम लोग को
रेगुलर बेसिस पे हमको कॉलिंग अटेंड करनी है, तो हमारा ब्लूटूथ ऑलवेज ऑन है। ब्लूटूथ जो आपका ऑन है, दैट इज अ वेरी रिस्क, क्योंकि कुछ ब्लूटूथ से ही वो आपके अपना उनके पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो आपकी सारी कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किस टाइम से क्या बात कर रहे हैं, उस कॉलिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे, और आपके जो क्लाइंट जो भी रिकॉर्डेशन है, जो भी आपके पास डेटा है, उस सबको वो मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड है या तो आपका डेबिट कार्ड है, उसका लोन बना करके एक्स्ट्रा कोई कार्ड बना करके आपके अकाउंट से सारा पैसा निकाल सकते। तो इसका ये नहीं है कि हमें बैंक के साथ कह दो कि हमारे पास पेटीएम है, पेटीएम इज सिक्योर बिकॉज़ दिस इज कनेक्टेड विद your bank, but the person who access your card, that is a risky point. So sir, ये जो fraud हुआ है, ये cyber security वाले ऐसे ऐसे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो आपके सारे डेटा को कंट्रोल बना सकते हैं। नहीं, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, ये कई चीजों का ये मिक्सचर हो गया है बेसिकली। तो जैसे क्लोन है, कार्ड क्लोन होता कैसे है? कार्ड क्लोन आप जैसे कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप अपना कार्ड स्वैप कराते हैं, वहां पे कोई डिवाइस लगाते हैं, वो मैग्नेटिक जो कुछ भी होता है उस मैग्नेटिक टेप में होता है सारा चीज, तो उसको कॉपी करके देन दूसरा कार्ड बना लेते हैं। तो ये तो ये चीजें हो गई। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट होने से ही कोई आदमी आपका मोबाइल ऐसे हैक नहीं कर सकता है। आपको जब भी आप इसमें फीचर्स होते हैं, जब आप कोई भी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो, पेयरिंग करते हो या कोई चीज करते हो, आप उसे एक्सेस देते हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो आप हैकिंग वाली बात कर रहे हैं ना, एपीके फाइल्स जो भी रिमोट एक्सेस जो फाइलें होती है, जैसे आपकी ईमेल और बाकी चीजों से आप अपने लैपटॉप का बाकी का एक्सेस किसी को देते हो, जस्ट लाइक वैसे ही आपके मोबाइल का भी एक्सेस होता है, उसकी भी एपीके फाइल्स आपने डाउनलोड कर ली। तो जो आप बोलते हैं ना कि लिमिट होती है थोड़ी सी, आज की डेट में आप सभी का बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर से लिंकेज है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका नाम है, उस पर आपके एसएमएस आते हैं, पैसे कितने आए, कितने गए आए। अगर आप उस सिम का एक्सेस किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो देखो वो आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। भीम ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, इंटरनेट बैंक, तो आपको उसी में करेगा, सारे ओटीपी आते रहते हैं सारे। अब जो ये लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, आपका तुरंत तो हर लिमिट होती है ना कि आपका अभी जैसे आप तुरंत एक्सेस मिला तो अगर आपका जैसे एक्सेस ले लिया किसी ने, तो एक्सेस लेने के बाद तुरंत तो उसकी वो एक दो दिन के लिए ग्रेस पीरियड देता है ना, कि आप उसको पेज में आप उस पेज लिस्ट में आप डालते हैं फेवरेट में, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम देता है। तो जब आपका मोबाइल में एपीके फाइल आप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स आप आए हुए थे, उनके में हुआ था कि उनके एक हफ्ते पहले उसने डाउनलोड करवाया, उनको डाउनलोड कर लिया, वो उसके बाद आराम से वो वॉच कर रहा है, वो जो भी ओटीपी आ रहा है, मोबाइल अपना एक्सेस उसके पास में है, उसने अपना नंबर उसमें डाल दिया, अकाउंट नंबर सारी चीज कर लिया, और उसके बाद इन बिटवीन जो मैसेज आया तो उस मैसेज को डिलीट भी करता रहा, उनको पता नहीं चला। फिर उसके बाद रात जब वो सो रहे हैं तो 12-1 बजे 2 बजे के आसपास सारा मैसेज आया, आपको ध्यान ही नहीं का एक मैसेज आ रहा है। ठीक लोग करते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी ना आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि आप मोबाइल सिक्योर रखिए। कोशिश करिए कि अगर आपका बैंकिंग से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, तो उसको किसी आप इंटरनेट के उससे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें, लेकिन कहाँ रखेंगे आप, आपको अपने को सिक्योर रखना पड़ेगा। आपको कोई भी उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक नहीं करना है, आपको सिक्योर मोबाइल रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल में कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है तो आप उसको डेटा तो ऑफ कर दीजिए। जैसे आप डेटा ऑफ कर देते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है कहीं से। A very important question. What curriculum changes or interdisciplinary models would you suggest to prepare students for AI-driven business challenges? And much, I guess, ये प्रॉब्लम होती है जब पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में आप देखते हैं तो लीगल एजुकेशन बहुत पीछे होता है और नहीं हुआ। So I guess देखिए the changes legal education बहुत clear है। Bar Council of India has came out with a notification about the new law including AI needs to be done, and this is the 20th May 2024 regulation. Education वही है, चाहे सर in the form of an IPS or advocates or anyone on that panel, or for the matter the new the young minds of the brain that I'm talking about. Legal education goes on 3 pillars: educate, empower, and eradicate. Educate like this. Now, even this panel, जो भी आपके सामने
and these all people from the different domains, और यही 4 डोमेन होते हैं, इसके अलावा कोई 5वां डोमेन नहीं है जहां हम क्राइम को बढ़ते न देखें, जैसे सर ने बोला, it is irrespective which tool was used for the crime, it is the end result that makes a crime. Crime और offense का जो main difference है उसमें। अब लीगल एजुकेशन में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक होता है curriculum based एजुकेशन, हमारे केस में, आप सबके केस में CCS यूनिवर्सिटी curriculum प्रोवाइड कर देता है, वो करता है। But as institution like IPM, like this panel discussion itself, ये केवल ये माध्यम नहीं है जहां सर with his practical experience, with sir in his legal court experience, हम आपको empower करें या educate करें, आप उस चीज को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आज अगर आपने सुबह शायद कॉल किया होगा तो आपको कॉल ट्यून सुनाई दी होगी, किसी भी माध्यम से आपको कॉल करने हैं, वो एक साइबर ऑफेंस हो सकता है। The purpose was to create awareness not only for you but also कि आप अपने घर में कैसे क्रिएट करें। सर ने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, मैं उसके एग्जांपल से अपने इसको थोड़ा सा कंफाइन करूंगा कि सर के बाद वाली जो जनरेशन है, सर के बेटे, सर की बेटी, और सर बोलते हैं उनसे कि नहीं आप मुझे बताइए what all plans that you are doing. For that matter, 3 things that we can buy out from here. Number 1, जो आप सीख रहे हैं as law students, please try to give it back and start from your own family experience. That's my first request. Second, please switch off the internet at least twice in a day. Not off your mobile. आप सोने जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपके फोन को 20 मिनट की जरूरत हो। These are just systems, and I borrowed this from what things that I mentioned. Cybercrime includes computer devices, and believe me, smartphones are computer devices. Anything which uses a Wi-Fi, anything which uses a network, which can be a group that ma'am is a device and is worthy enough to include into a cybercrime. Number one. MI phone search pension, that's an only phone which is still using infrared technology. आपको बड़ा अच्छा लगता होगा MI के फोन से आप प्रोजेक्टर स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर लेते हैं, but that is also a network. For that matter, आप सोसाइटीज में रहते हैं, जैसे आपकी कार एंटर करती है, the boom barrier of the society automatically gets up. That's also a network. Tools, for that matter, is also same network. Can offensive or can food. Now the device, which is a recent case, पहले हमें पता था जामतारा was a hub in our country जहाँ cyber crimes होते हैं. We all saw that series. If you haven't, please see it. The reason it has lost students, we should see it. Now, I was working past in Gurugram, nearby Sona and Sir would definitely know. उसके पास एक छोटी सी जगह है No, and No is the new hub. Forget about that. Each state, Rajasthan में there is a hub. अपने उत्तर प्रदेश में there are 3 hubs which are emerging to be cyber fraud hubs. And प्रैक्टिकली अब तो बहुत सारे हो गए हैं, बरेली के पास में भी अब मिल गया और भी बहुत सारे जगहों पे। Because of the, I'm really sorry to intervene with you. ये अभी हमारे पास समय कम है और कोई जी हाँ। मेरा क्वेश्चन है, do you believe there is a growing need for international digital human rights framework considering the cross-border nature of AI and automation? Anyone? कोई आंसर दे सकेगा? Let the student ask the question to the panelists. कोई दिक्कत नहीं। They are also educated. They have gone through with the ITA. हाँ जी प्लीज, आपके कोई क्वेश्चन किसी से प्लीज? Raise your hand for asking a question. Please, I request this because you know what we have to बहुत कम meetings जहाँ you have a police and a prosecuting advocate जो इस domain की है. So please don't feel मतलब feel एकदम absolutely free when you are asking this question. It can be a personal thing जो आप please go.
We were talking about the perceived digital age that is altogether a big difference in the context of India. We see that in the shopping mall itself, for a 5 rupees discount, we gave our name and number to the shoppers. So that was the kind of activities that we do in our everyday life. My question to you is simply that in the traditional notions of sovereignty are regularly challenged by the transnational cyberspace. It is very much evident that we really need some international regulatory over to control the transnational nature of this cyberspace and cybercrime. Thank you so much. हिमांशु जी, क्या आप इनका इसका आंसर देना चाहें? I would definitely like the question that you asked is very important and I go usi usme it was very as well. So things are rightly mentioned that I'll borrow that from what given one rightly mentioned in my novel. Transnational cybercrimes are basically something अगर मैं पहले word को divide करूँ तो जहाँ बहुत सारे nations involved हो and this is what rightly ma'am said कि offender जो है जो offense कर रहा है वो एक country में बैठा है वो deepen या APK as server rightly mentioned वो कहीं और से आता है और victim किसी और country में in our case हम वो example देखेंगे ज़्यादा जहाँ victim India में now as per rightly mentioned by Upin sir, there are already provisions which are taking it up. He borrowed rightly mentioned the ancestral model, which is allowing the cases where such things can be prohibited. And nowadays, even with banking and other intermediaries being thought of to, secure apps and secure things are allowed. Now, you rightly mentioned about the more, and I'll just conclude by answering this. All these cyber offenses are somewhere is in the form of there are only two things, greed or fear. Greed of getting something. आपको इस चीज के ऊपर ये मिल रहा है, आपको इतना पैसा मिल रहा है. First, fear is what sir I mentioned of digital arrests. You get a call from police, you get a call from custom, you get a call from anywhere. Nowadays there is new thing that I'm standing in a police station और आपके बच्चे मेरे सामने हैं जिस पर रेप के charges लगे. Charges भी ऐसे which is terrifying in nature और तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए पैसा या कुछ ऐसा. Now first thing as rightly mentioned, do not take unrecognized sources. No police officer would ever video call you. और ये बात सर भी जस्टिफाई करेंगे, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि इस सेशन के बाद आप जितने लोगों को जस्टिफाई और जितने लोगों को ये चीज उनसे बता सकते हैं वो ना करें. The purpose of these seminars is this one. It's merely sir is spending sir लोग एक पूरा वीक बनाते हैं साइबर अवेयरनेस पखवाड़ा जिसको कहा जाता है. वो पर्पस यही होता है कि हम जितना अवेयर रहें, हम जहाँ पर टॉपिक पे बात करें एआई हम सब ने एक ट्रेंड देखा, किसी ने एक अपनी कार्टून इमेज बनानी है, हम यस 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 हमने करा और हम सब ने अपने स्टेटस में करा है. Do you know what we have agreed that for the next 24 hours they can utilize our phones. This is exactly the cookies. This cookie is not that cookie which we eat. These cookies are the most and you nowadays it's mandatory. कोई भी वेबसाइट चाहिए वहाँ 3 ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज और आप आगे बढ़ने के चक्कर में आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज को क्लिक कर दो. Some may be recognized websites when you are using. Please see जो भी HTTPS वाली वेबसाइट्स हैं, प्लीज उसी पे आगे बढ़िए. इंटरनेट बैंकिंग की जैसा मैंने बोला फिशिंग के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू वो डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं जो सिक्योर्ड नहीं है और आप उसमें अपने लॉगिन डिटेल्स जैसे ही एंटर करते हैं वो रिकॉर्ड करके आपको फ्रॉड का जरिया बनाते हैं. तो ट्रांसनेशनल यस टुडे इज द नीड. इंडिया जो अनसिक्योर्ड मॉडल लॉ है इसका नाम ही मॉडल लॉ वो वर्ल्ड क्लास में है और जितने सिग्नेटरीज कंट्री हैं 85 नंबर तो उसी मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग्स में अपने इंडियन या डोमेस्टिक लॉ को बनाए. तो ये एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जैसे सर ने बोला है कि ये हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जब भी आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन करने में चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप अपना जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हॉटस्पॉट बना करके ना तो किसी को परमिशन दीजिए कि वो आपका हॉटस्पॉट बना करके ट्रांजेक्शन करे ना आप कीजिए या अगर आपका ट्रांजेक्शन फेलियर होगा
हॉटस्पॉट बना करके तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, और या किसी ने आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट बना करके ट्रांजेक्शन कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है तो वो भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि ये जो हॉटस्पॉट वाला जो एड्रेसेस है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे एड्रेसिंग मोड में नहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए ऑलवेज रिमेम्बर जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने ही सिस्टम से कीजिए, दूसरे को अलाउ मत कीजिए कि वो आपके सिस्टम को, अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मुझे आप हॉटस्पॉट लेकर के इंटरनेट कनेक्शन दे दो और मैं उससे ट्रांजेक्शन करूँ, तो ये परमिशन मैं ऑलवेज यही कुछ चीजें ऐसी हैं, छोटी सी चीजें हैं जिससे हम लोग हमारे ही सिस्टम से फ्रॉड हो सकता है, और हम अदरवाइज कोई भी फ्रॉड करेगा एड्रेसेस ऐसे हैं जिससे आइडेंटिफाई इजीली हो सकते हैं। जो नेट बैंकिंग है उस पर बहुत कंट्रोल रखना है, और आपको हॉटस्पॉट वगैरह बना करके जो फैसिलिटीज है उस पर कंट्रोल करना है। हमेशा याद रखिए जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कनेक्टेड विद द बैंक, तो आपका कोई भी कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ फ्रॉम बेनेट यूनिवर्सिटी। मेरा रिसर्च डोमेन है क्रिप्टो करेंसीज एंड रिलेटेड क्राइम्स, और ये एसटीएम पैनल से मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, अगर इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड इंडिया में होते हैं, क्योंकि जो बाय करके फ्रॉड पर 1.4 मिलियन यूएस डॉलर के अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट, हम इंडियंस को इतना बड़ा फ्रॉड अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एज एन इंडियन लॉज कैसे उसको बैक कर रहे हो, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको पकड़ती कैसे है, अगर पकड़ भी लेती है तो उसको रिकॉर्ड कैसे कराए, प्रोसेस को कुछ शॉर्ट में मेरे पैनल से आंसर। थैंक You are the better person. इंडिया में भी ये चीज हुई है। अगर आप देखेंगे वजीर एक्स का जो स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था, जो ऐसा सिंक्रोनाइज हो गया था, तो उसके लिए भी अभी कुछ चल रहा है। एंड आई थिंक देयर इज अ गुड न्यूज दैट यूएस इज कमिंग आउट विद द लॉ ऑन द क्रिप्टो करेंसी, so we can follow the footsteps. There are certain strategies which are going on already in India also, उसको भी करके, because it is very intertwined with the cyber enactment, cyber streams, so we have to take everything in harmony and move forward. exact section can back it. Sorry? Which exact section can back it? I'm just asking about any IT Act का section जो इसको backing देता है. Yes, IT. See, I said you in the beginning itself कि जो IT Act में लिखा है कि अगर आप section 75 में लिखा है कि अगर वो चीज डिफाइन नहीं है IT Act में, तो IPC में, भारतीय न्याय संहिता में चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है, you have to remedy there. So they will go hand in hand. Yes, indeed. Thank you. I'm always there. तो देखिए क्रिप्टो में अगर फ्रॉड हो रहा है या आपके रुपीज में फ्रॉड हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धाराएं सेम रहती है। वही जैसा कि आईपी लगाते हैं हम लोग और सपोर्ट करती है आईपीसी का जैसा ये सर्विस धारा रहती है। तो इसमें क्रिप्टो के पैसे कोई अलग तरीके से नहीं होता। अब बात आती है क्रिप्टो के पैसे वापस कैसे आते हैं, क्रिप्टो की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप मेरे लिए भी फ्रूटफुल हैं। मैं चाहूंगा कि आप नंबर जरूर शेयर करिएगा। और क्रिप्टो फ्रॉड पे इस समय थोड़ा सा मतलब टफ सा है, और क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे आप जब भी कभी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, जिसमें कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। क्रिप्टो फ्रॉड आपने एक चीज बोली, उसमें थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इंडिया में क्रिप्टो हमारे यहाँ 4 करोड़ रुपए का एक सिंगल फ्रॉड लिखा हुआ है एक नेता ने क्रिप्टो का। तो वी आर इंडियन आर वेरी ठीक ठाक है पैसे के मामले में, तो ये वाली बात नहीं है। तो आप इसमें अब होता है कि जैसे आप फ्रॉड 2 टाइप का हो रहा है क्रिप्टो में। एक तो होता है कि आपका बाइनेंस में या जो भी वजीर किसी में क्रिप्टो में आपका वॉलेट खुलवाया और आपने उस वॉलेट में अपने पैसे डाल के वहां से एक्सचेंज से क्रिप्टो आपने ले लिया और उस क्रिप्टो को आपने कहीं और लगाया। अब वो कहीं और आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं देन सो के, अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इसमें जो जो वो वाला फ्रॉड हुआ था वो मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, आपके रिसर्च में भी शायद काम आए वो। तो एक साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद वो जापान जाए
तो एक जापानी लड़की से उन्होंने सोशल मीडिया पे चैट हुई, उसने उनको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए बताया, और उन्होंने सारे अपने पैसे जो है रिटायरमेंट के बाद मिले थे, जो पूरा पैसा अपना जीपीएफ में कराते थे, सारा पैसा इकट्ठा था, पूरा पूरा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उसमें। तो अब उसमें हुआ ये कि उन्होंने क्रिप्टो में पहले कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उस टेकी द्वारा बताए हुए वॉलेट में पैसे डाले। हमें थोड़ा सा ना हम लोग को झेलने की आदत डाली है, हम लोग जल्दी रैप करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो अब जब पूछा है तो बताएंगे, पूरा उसके बाद कभी मत पूछिएगा। तो हाँ, इसी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोग दूसरा प्रश्न ना पूछिएगा तो हम उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो आपको अगर रैपअप कराना है तो इन लोगों को बोलिए कि ये लोग रैपअप करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें ये हुआ कि उन्होंने एक अपने जो वॉलेट की कई तरह के हैं, ये ब्लॉकचेन का है, सब आपको जान लेंगे अच्छी तरह से इसको। तो जो बाइनेंस के थ्रू, अगर बाइनेंस किसी वॉलेट में गया है तो हम जब बाइनेंस से मांगते हैं कोई भी डेटा, तो बाइनेंस हमें दे देता है, उसकी यूजर आईडी, उसकी केवाईसी सब कुछ मिल जाता है, और हम उसे कोर्ट से ऑर्डर करा के उसे वापस रिवर्स भी करा लेते हैं। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन में किसी ऐसी जगह पे चला गया जो वॉलेट यहाँ तक रिकॉग्नाइज नहीं है जिसका एक्सचेंज, तो फिर वहां से पैसे वापस नहीं आते। हम बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, उस पर देखते रहते हैं कि पैसा कहाँ पर पार्क है, और जब कभी वो पैसा वापस एक्सचेंज में आएगा किसी भी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में, और वहां से पैसा बाहर निकलेगा तो वहां निकल जाता है। बट फॉरेन में कई ऐसे एटीएम से जो क्रिप्टो में पैसे को कन्वर्ट करके निकाल देते हैं, ऐसा है, तो वहां से पैसे निकल जाते हैं, तो फिर नहीं मिलते। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, और इसमें अगर उसने अपने अकाउंट में लेके और क्रिप्टो में ट्रेडिंग के नाम से अगर वो करता है फ्रॉड, तो वहां पे पैसे, क्योंकि इंडियन अकाउंट में पैसे गए होते हैं, तो वहां से पैसे रिफंड जाते हैं। तो क्रिप्टो फ्रॉड दो तरीके के हैं, दूसरे वाले में दिक्कत आती है, इस वाले में तो पैसे रिफंड जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक लाइन एंड में बोलूंगा मैं, just एक लाइन, if I'm permitted to do so. I have a panacea that you are not the victim of cyber fraud. That panacea is digital minimalism. एक लाइन पढ़ूंगा मैं, उसको मैं भी ट्राई करता हूँ फॉलो करने के लिए, आप फॉलो करना। A philosophy of technology use in which you focus on your online time on a small number of carefully selected and optimized activities that strongly support things you value, and then happily miss out on everything else. That's the digital minimalism we can follow, and we can save ourselves from the digital crimes. Thank you so much to all our panelists for such an enlightening basic question. I would like my panelists to stay on the stage because we'll be going ahead with the appreciation ceremony of few students. And I would also like to call upon stage Dr. Giri Sharma ma'am and Dr. Shashank sir for the felicitation of students. We take this immense pride in acknowledging some of the remarkable efforts and accomplishments of our students who have participated in distinction academic and curricular competitions at prestigious external institutions during the academic year of 2024-25. We begin with celebrating the outstanding entrepreneurial spirit of Mr. Varun Khera and Mr. Farhan, who have left an incredible mark in several idea pitching and business plan competitions with their innovative concept of cup to eat edible cups. They are Dear Madam Institute of Technology and Management, Sundar Deep College, Modern College of Professional Studies, and ITS Mohanashri. In recognition of the consistent excellence and contribution, IPM is proud to present them with an appreciation letter and a scholarship of 10,000 rupees to Mr. Varun Khera and Mr. Ms. Shivya Trina and Ms. Varsha Rani.
We extend our heartfelt congratulations to these students for their exceptional performance in the Ad competition at Dr. Abdul Kalam Intertechnical University of Literacy Management and Technical Fest. Their creativity and collaboration led them to achieve top honors at both state and zonal level. As a mark of appreciation, each student is being awarded a scholarship of 2,500, totaling to 10,000 for their remarkable achievement. Give them a huge round of applause. State level पे कितना साइड में Mr. Anshul Tandon, MBA first year student, for their impressive research contribution by paper presentation at JP Business School, London. Mr. Kali Gaur has authored the paper, The Role of Psychological Factor as a Key Element of Sustainability, while Mr. Anshul Tandon has authored the paper, Footprint Machine, a fintech innovation for cash accessibility. I'm also proud to announce that the Institute will be helping Mr. Anshul Tandon in getting the patent reserved for footwear machine. Give them a huge round of applause. Both the students are awarded a scholarship of rupees 2,500 each for their contribution. Thank you so much, everybody. Now I'd like to call Dr. Purnima Chaudhary, HOD IPEM Law Academy, and Professor Dr. Yogesh Gupta on with us for the readings of conference proceedings. I'd also like to put on stage Advocate Parul Gurudej and Professor Dr. Kiran Gupta for the readings of conference proceedings. Academic research is a cornerstone of progress. As a testament to the knowledge and research shared through the seminars, we now unveil the conference proceeding, a compilation of impactful research that will serve as a resource for scholars and practitioners alike. I now invite all the dignitaries, HODs, and leaders to officially release the seminar proceedings of National Seminar 2025, a collection of innovative research of extended abstracts that contribute to a collective knowledge of a cyber-secure future. Please give a huge round of applause while the guests are reading. As they are unveiling the masterpiece, please continue the round of applause for all the researchers, scholars, delegates, students, incredible work and experience.
It is my distinct honor to invite Dr. Shashank Chaudhary, Dean at IPEM, to deliver the closing remarks. Has been a matter of pride and privilege to all of us at IPM Group of Institutions and particularly IPM Law Academy that today such eminent panelists have gathered for the panel discussion. And we also welcome the research scholars, the eminent professors, the authors who will be presenting their research papers in the coming technical sessions, and the workshop will also be conducted. So it's a platform for great learning for all of us, and we have gained new insights today regarding the very important topic, and that is cyber security and how to have measures for taking up the challenge of this cyber security in our lives. And it's an important topic for all of us, whether we are related to the legal field or not legal. And the inputs which have been shared today will go a long way in enlightening our knowledge and understanding and make us more conscious towards being more aware about cyber security and cyber laws, so that we can have a more safer, secure life in all our domains, in all dimensions in the coming time. And I would like to congratulate the IPEM Law Academy also for organizing this important seminar, where more than 90 research papers have been received from all over India and across borders also. And such eminent guests have also been gathered for this seminar. It's a matter of pride for all of us at IPEM Law Academy. I congratulate IPEM Law Academy for this. And I wish and I believe that with the cooperation, contribution, and support of all of us, this seminar is going to be a great success. So wish you all best of luck. God bless us all. Thank you very much. As we drive towards the end of this inaugural session, let us all stand together in respect and pride as we pay tribute to our great nation with the national anthem. Come forward. I request all after this inaugural session, we started off with the